Motion in a plane. Solution of JEE Mains 2025 questions. Question number 1. The angle of projection of a particle is measured from the vertical axis as phi, and the maximum height reached by the particle is hm. Here hm as a function of phi can be presented h. Projectile motion, horizontal से एंगल थीटा, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड अगर u है इनिशियल वेलोसिटी, तो h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर एंगल दिया है वर्टिकल से फाई, तो फाई थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज 90 डिग्री माइनस फाई। एच फाई के रूप में हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस फाई बाई 2g और यू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाई 2g। एच एम, तो फाई और एच एम का जो ग्राफ अप्रोप्रिएट ग्राफ is graph number 3. Third option is correct. Question number 2. A particle is projected with speed u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. The horizontal range of the projectile is given as nu square by 25g, where value of n is given, g is acceleration due to gravity. मैक्सिमम हाइट रीच्ड h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। r is 3 times of h, r is equal to 3h और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g is equal to 3 into u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्रॉस हो गया, जी से जी क्रॉस हो गया। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक साइन से एक साइन क्रॉस हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4/3 4 3 एंड दिस इज 5। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा विल बी 4/5 and cos theta will be 3/5। रेंज होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और u स्क्वायर बाई जी, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वैल्यूज पुट कर दें 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 24 u स्क्वायर बाई 25g and this is given as nu square by 25g, hence n is equal to 24. Fourth option is correct.
Question number 3. Two projectiles are fired from ground with same initial speed from same point at an angle 45 degree plus alpha and 45 degree minus alpha with horizontal direction. The ratio of their time of flight is. टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. तो t1 होगा 2u साइन 45 डिग्री प्लस एल्फा बाई जी एंड t2 इज इक्वल टू 2u साइन 45 डिग्री माइनस एल्फा बाई जी. t1 रेशो t2, जब डिवाइड करेंगे 2u से 2u क्रॉस हो जाएगा, g से g क्रॉस हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस एल्फा अपॉन साइन 45 डिग्री माइनस एल्फा. साइन 45 डिग्री होता है साइन 45 इंटू कोस एल्फा प्लस कोस 45 साइन एल्फा अपॉन साइन 45 कोस एल्फा माइनस कोस 45 साइन एल्फा. कोस 45 एंड साइन 45 की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2 के इक्वल होती हैं. तो साइन 45 से डिवाइड कर देंगे, जब 1/√2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा बाई कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा. कोस एल्फा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा. जो रेशो है 1 प्लस टेन एल्फा 1 minus 10 alpha, this fourth option is correct. Next, two balls with same mass and initial velocity are projected at different angles in such a way that maximum height attained by the first ball is 8 times that of higher than that of the second ball. T1 and T2 are total flying time of first and second ball respectively. Then ratio of T1 and T2 is. Suppose first ball is projected at theta degree with horizontal and second ball is projected alpha degree from horizontal. The maximum height attained by the first ball h1 is equal to u square sin square theta by 2g and h2 second ball जो अटेंड करेगी that is u square sin square alpha by 2g. h1 is 8 times of h2, तो u square sin square theta by 2g is equal to 8 into u square sin square alpha by 2g. Sin square theta is equal to 8 sin square alpha और बोथ साइड रूट ले दें तो 2√2 साइन अल्फा. T1 होगा 2u साइन अल्फा साइन थीटा बाई जी एंड T2 होगा 2u साइन अल्फा बाई जी. रेशो T1 बाई T2
is equal to 2u sin alpha by g by sin theta by g, 2u sin alpha by g. Sin theta by sin alpha, and from here this is 2 root 2 ratio 1. So T1 ratio T2 is 2 root 2 ratio 1. Option 1 is correct. A river is flowing from west to east direction with speed 9 km per hour. If the boat is capable of moving at maximum 27 km per hour in still water, crosses the river in half a minute, while moving with maximum speed at an angle of 150 degree to the direction of the flow, then the width of the river is. Like river is flowing, suppose this is west to east, or boat is moving with 150 degree of flow, 150 degree, 27 kilometer per hour. The speed of boat V is 27 kilometer per hour, or 27 into 1000 divided by 3600, 30 by 4, or 15 by 2 meter per second. This angle is 90 degree, hence this is 60 degree. The component of speed of boat in direction of width, along width, along width जो component होगा that will be V cos 60 degree, or 15 by 2 cos 60 degree is half, 15 by 4 meter per second. Time is given half minute or 30 second. Width of river will be component of speed V cos 60 into T. V cos 60 is 15 by 4, or this is 30, 15 to 225 by 2, 112 by 5 meter. Width होगी that is 112.5 meter. Option second is correct. A particle is projected at an angle 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. The height traversed in the first second is h dot, and height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h by h1. The ratio of
h dot to h1 is, take g 10 meter per second square, projectile 60 degree, 30 degree, or this is u 60 meter per second. वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इज यू साइन 30 degree, 60 into half 30 meter per second. Vertical height traversed uy into t minus half gt square, and this is given as h dot. H dot is 30 into 1 minus half 10 into 1 का square, 30 minus 5 is equal to 25 meter. Then suppose last minute starts from A and highest point is B. This is horizontal line, और ये दिए हैं H1. हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0. तो जितना एक सेकंड में ये ऊपर जाएगा वर्टिकल हाइट, उतना ही एक सेकंड में ये डाउन आएगा. डाउन आएगा, दिस विल आल्सो H1. और डेस्केंट इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज vy इज इक्वल टू 0 एंड g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो h1 होगा vy इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर, 0 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 मीटर. रेशो h dot h1 is 25:5 or 5:1. This will be the ratio 5:1. Question number 7. A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with the horizontal. The decrease in kinetic energy of ball during the motion from point of projection to the highest point is. Mass is 100 gram or 0.1 kg. This is u and this is theta. This is projectile. U is 20 meter per second. (60°) and mass is 0.1 kg. Point of projection is O और highest point suppose A. तो हाईएस्ट यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इज 20 cos 60 और 20 इंटू हाफ 10 मीटर पर सेकेंड.
and vertical component will be 20 sin 60. जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर. तो Vx will be Ux is equal to 10 meter per second. O पर suppose kinetic energy is K1 and K2. A पर kinetic energy, loss in kinetic energy या decrease in kinetic energy is K1 minus K2. K1 is half m u square and K2 is half m ux square. Half m u square minus ux square और 1 by 2 into 0.1, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 1 by 2 into 0.1 into 300, 15 जूल. डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी 15 जूल. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. Question number 8. Two projectiles are fired with same initial speed from same point of ground at an angle 45 degree minus alpha and 45 plus degree plus alpha respectively with horizontal direction. The ratio of their maximum height attained is. Suppose initial velocity is u. हाइट अटेंड का जो फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो h1 फर्स्ट केस में जो हाइट अटेंड होगी h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 2g. Similarly, h2 will be u square sin square 45 degree plus alpha upon 2g. डिवाइड रेशो निकालेंगे h1 बाई h2. जब डिवाइड करेंगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, 2g से 2g क्रॉस हो जाएगा. तो ये होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अल्फा. कोस 2 थीटा जो होता है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2. इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो h1 बाई h2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos 2 थीटा. cos 2 इंटू 45 डिग्री माइनस अल्फा और 1 माइनस कोस 2 45 डिग्री प्लस अल्फा. 1 माइनस कोस 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा and 1 plus cos 90 plus 2 alpha. 1 minus sin 2 alpha by 1 plus sin 2 alpha. This will be the ratio 1 minus sin 2 alpha upon 1 plus sin 2 alpha. Option 2 is correct. Question number 9. The position vector of a moving body at an instant of time is as
given as r is phi t square I cap minus phi t square j cap pi t j cap meter. The magnitude and direction of the velocity at t is 2 seconds. Position vector is given as phi t square I cap minus phi t j cap. Velocity at any instant v will be d, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt. phi into 2t I cap minus phi into 1 j cap tan t I cap minus phi j cap. Velocity in horizontal direction will be tan t I cap, और at 2 अगर हम v2x से डिनोट करें तो दैट विल बी tan into 2, दिस इज I cap 20 I cap. Similarly y डायरेक्शन में 2y is minus phi j cap. तो magnitude of velocity at 2 second v2 is equal to v2x का स्क्वायर प्लस v2y का स्क्वायर अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 400 प्लस 15 25 425 अंडर रूट 5 रूट 15 मीटर पर सेकेंड. तो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 5 रूट 15. अब डायरेक्शन देखें, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव एंड दिस इज वाई नेगेटिव. वेलोसिटीज हैं 20 आई कैप इस डायरेक्शन में 20 और माइनस का है 5, दिस इज 5. तो सपोज y माइनस वाई डायरेक्शन से इसका एंगल रिजल्टेंट इज दिस एंड दिस एंगल इज थीटा. tan theta will be 20 by 5 is equal to 4. Theta is tan inverse 4. जो माइनस वाई डायरेक्शन से जो एंगल है दैट इज tan इनवर्स -4 एंड मैग्नीट्यूड इज 5 रूट 15. Hence this first option is correct.